Perhaps no other recent foray in diplomacy has attracted as much attention as the recent Chinese triumph in negotiating the Iran-Saudi agreement. It is a triumph that was achieved at a time when the United States and its Western allies were seeking to tighten the screws on China, with sanction upon sanction being imposed, scheduled meetings being cancelled and clear statements that while the U.S. did not want war, they were in a direct competition that they intended to win if they could, without provoking a conflict. Loose statements at the U.S. president's level suggested that the three assurances on the Chinese aim of reunification of Taiwan were losing their value. The U.S. State Department has welcomed the success of Chinese diplomacy, in rather lukewarm terms, but the plethora of comments by Western commentators all question the durability of the rapprochement, given what they see as irreconcilable differences between an ostracized Iran and the Gulf Cooperation Council, an organization that owed its origins to apprehensions entertained by the largely Sunni countries of Iran's relationship with the Shias in the region, and in particular, Iran's relationship with the Houthis in Yemen. These fears may well be well-founded. Neither the Saudis nor the Iranians have suggested that all issues are on their way to a solution, but the resurrection of a 20-year-old accord and the reopening of embassies are good signs. What seems to have been missed, however, is what the current pleasant climate can do to make the region safer, specifically with regard to the FSO Safer, the tanker parked in the Yemeni port and in danger of collapsing. In March 2015, soon after civil war began in Yemen, the tanker fell into Houthi hands. The force had taken control of the coastline in the area where it was moored. In the years that followed, the tanker's structural condition deteriorated significantly, leading to the risk of a catastrophic hull breach or explosion of oil vapors that would typically be suppressed by inert gas generated on board. The tanker, at that point, was believed to have 1.14 million barrels of oil worth up to $80 million, which became a point of contention in negotiations between the Houthi rebels and Yemeni government, both of which asserted claims to the cargo and vessel. The Saudis, UAE and Iran could deploy their resources to unload the oil from FSO Safer. Earlier this month, the head of the United Nations Development Programme, Joachim Steiner, said in a statement that the UN agency had purchased the Safer along with a tanker undergoing refit in China to begin the first phase of the operation to remove an estimated 1.14 m barrels of crude oil. The operation is estimated to cost $129 million. Of which $75 million had been received, and a further $20 million was pledged. Apparently, the UNDP is to begin operations in May 2023. It may have set a date, but it would perhaps be best for the UNDP to hasten the process, relying on the fact that in the current circumstances the Iranians could be depended upon to prevent any obstructive steps being taken by the Houthis. It is, in my view, a fortunate circumstance that there is no need for the deployment of Western or Chinese expertise. The countries of the region have the tankers and the tugboats, etc. needed for the project. While I am no expert on shipping matters, I do believe that the current propitious climate should be taken advantage of, and instead of waiting for the tanker to be refitted in China, the Saudis, the UAE and Iran should deploy the resources they have and do this more quickly than the UNDP envisages. Why am I anxious that this unloading of the oil from the FSO Safer be done very quickly? There are spoilers both within the region, and more importantly perhaps, from outside the region who would like to undo the success of Chinese diplomacy. Despite the Saudi efforts to carve out an independent policy, they do remain largely dependent on Western sources for the arms that they believe they need. After India, Saudi Arabia is the largest importer of arms, and that means they need not only the support of the U.S. State Department but also of the U.S. Senate. Some statements coming from U.S. senators have made it clear they are skeptical about the success of Chinese diplomacy, and may be tempted to sabotage it. The tanker and the possible leakage of its contents are an environmental danger to the Red Sea and Suez Canal routes, but it is important for Pakistan also because this country's coast too would be affected by one more man-made disaster, something that we should bend our diplomatic efforts to avoid. The writer is a former foreign secretary and former ambassador to Iran and the United States. Published in Dawn, March 23, 2023.
Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. शायद सफारतकारी में हालिया पेशरफ्त ने इतनी तवज्जो हासिल नहीं की जितनी ईरान सऊदी मुआहदे पर मुज़ाकरात में चीन की हालिया कामयाबी ने हासिल की है। ये एक ऐसी फतह है जो एक ऐसे वक्त में हासिल की गई है जब अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी चीन पर पाबंदियां आयद करने की कोशिश कर रहे थे। पाबंदियां आयद की जा रही थी, तयशुदा इजलास मनसूख किए जा रहे थे और वाज़े बयानात दिए जा रहे थे कि अगरचे अमेरिका जंग नहीं चाहता, लेकिन वो बड़ा रास्त मुकाबले में हैं कि अगर वो जीत सकते हैं तो जीतना चाहते हैं, किसी तनाज़ा को भड़काने के बगैर। अमरीकी सदर की सतह पर ढीले बयानात से पता चलता है कि ताइवान के दोबारा इत्तेहाद के चीनी मकसद पर 3 यकीन दहानियां अपनी अहमियत खो रही है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चीनी सफारतकारी की कामयाबी का खैर मुकद्दम किया है, लेकिन मगरबी मुबस्सरीन की जानिब से तबसरों की कसरत इस मुफाहमत की पायदारी पर सवाल उठाती है, क्योंकि उनके ख्याल में ईरान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान नाकाबिल तलाफी इख्तलाफात पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर यमन में हौसियों के साथ ईरान के ताल्लुकात। ये खदशात अच्छी तरह से कायम हो सकते हैं। ना तो सऊदी अरब और ना ही ईरानियों ने यह तजवीज़ दी है कि तमाम मसाइल हल होने की राह पर गामजन हैं, लेकिन 20 साल पुराने मुआहदे की बहाली और सिफारत खानों को दोबारा खोलना अच्छी अलामत है। ताहम ऐसा लगता है कि मौजूदा खुशगवार आब हुआ खित्ते को महफूज बनाने के लिए क्या कर सकती है, ख़ास तौर पर FSOSF के हवाले से, जो यमनी बंदरगाह में खड़ा टैंकर है और जिसके मुनहदम होने का खतरा है। मार्च 2015 में यमन में खाना जंगी शुरू होने के फौरन बाद टैंकर हौसियों के कब्जे में चला गया। फोर्स ने इस इलाके में साहिल छोटिया पट्टी का कंट्रोल संभाल लिया था, जहां उसे निशाना बनाया गया था। इसके बाद के सालों में टैंकर की सख्ती हालत नुमाया तौर पर खराब हो गई, जिसके नतीजे में तेल के बुखारात के तबाकुन टूटने या धमाके का खतरा पैदा हुआ, जो आमतौर पर जहाज पर पैदा होने वाली गैर फाल गैस के जरिए दबाया जाएगा। इस वक्त ख्याल किया जाता था कि इस टैंकर में 1.14 मिलियन बैरल तेल था, जिसकी मालियत $80 मिलियन तक थी, जो हौसी बागियों और यमनी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में तनाज़ा का मौजू बन गया था। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान FSOSF से तेल उतारने के लिए अपने वसाइल बरोए कार ला सकते हैं। रवां माह के अवाइल में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के सरबरा अख़म सिटीनर ने एक बयान में कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चीन में रिफुट होने वाले टैंकर के साथ सैफ को खरीदा है, ताकि एक अंदाजे के मुताबिक 1.14 मिलियन बैरल खाम तेल को हटाने के ऑपरेशन के पहले मरहले का आगाज किया जा सके। ऑपरेशन की लागत का तखमीना $129 मिलियन लगाया गया है, जिसमें से $75 मिलियन मौसूल हो चुके हैं और मजीद $20 मिलियन का वादा किया गया है। बज़ाहिर UNDP मई 2023 में काम शुरू करने वाला है। हो सकता है कि इसने एक तारीख तय कर ली हो, लेकिन UNDP के लिए बेहतर होगा कि वो इस अमल को तेज करे, क्योंकि मौजूदा हालात में हौसियों की जानिब से उठाए जाने वाले किसी भी रुकावट छूटिए इक़दाम को रोकने के लिए ईरानियों पर इन्हिसार किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये एक खुशकिस्मत सूरत हाल है कि मगरबी या चीनी माहिरीन की तैनाती की कोई ज़रूरत नहीं है। खित्ते के ममालिक के पास इस मंसूबे के लिए दरकार टैंकर्स और टग बूट्स वगैरह मौजूद हैं। अगरचे मैं जहाज रानी के मामलात का कोई माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मौजूदा माहौल से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए और चीन में टैंकर को दोबारा नस्ब करने का इंतज़ार करने के बजाय सऊदियों, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान को अपने पास मौजूद वसाइल को बरूए कार लाना चाहिए और UNDP के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये काम करना चाहिए। मैं क्यों परेशान हूँ कि FSOSF से तेल की ये उतारी जाए, बहुत जल्दी की जाए। खित्ते के अंदर और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि खित्ते के बाहर से भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीनी सफारतकारी की कामयाबी को ख़त्म करना चाहते हैं। सऊदी अरब की जानिब से आज़ादाना पॉलिसी वज़ा करने की कोशिशों के बावजूद वो उन हथियारों के लिए ज़्यादातर मगरबी ज़राए पर इन्हिसार करते हैं जिनके बारे में उनका ख्याल है कि उन्हें उनकी ज़रूरत है। भारत के बाद सऊदी अरब हथियारों का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है और उसका मतलब है कि उन्हें न सिर्फ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट बल्कि अमरीकी सेनेट की हिमायत की भी ज़रूरत है।
अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से आने वाले कुछ बयानात ने यह वाज़े कर दिया है कि वो चीनी सफारतकारी की कामयाबी के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं और इसे सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं। टैंकर और उसके मवाद का मुमकिना इखराज बहरा अहमर और नहर सुएज के रास्तों के लिए माहौलियाती खतरा है, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए भी अहम है क्योंकि इस मुल्क का साहिल भी एक और इंसानी साख्ता तबाही से मुतासिर होगा, जिससे बचने के लिए हमें अपनी सिफारती कोशिशों को मोड़ना चाहिए। मजमून निगाह साबिक वजीर खारजा और ईरान और अमरीका में साबिक सफीर हैं। अखज़ शदा बतारीख 30 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.